Good morning, my dear respected students. And today I'm just begin with a new chapter, and the name of that chapter is recursion. So it's my humble request that you all are requested to kindly concentrate and do practice after this Zoom session. So here it is. I'm just begin with the content here. The first thing what we are supposed to discuss here is a introduction, that what do you understand by a recursion here. So kindly concentrate. First of all, we are talking about a definition here, my dear respected students. Definition says recursion refers to a programming technique in which function call itself either directly or indirectly. अगर सरल शब्दों में इसको explanation दूं और ये बोलूं तो in that case I'm just going to elaborate this thing, that this is a technique in which the function call itself. जैसे for example मैं खुद ही बोलना शुरू करूं कवलजीत, तो मैं क्या कर रहा हूं? I'm just going to repeat things, and in that concept we have two different options, whether we are going to call it in a direct way or in a indirect way. Sir, मेरी यहां तक की बात जिनको समझ आ गई है चैट बॉक्स में यस नो टाइप कर दीजिएगा. वेरी गुड. जितना अभी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बोला, दैट रिकर्शन इज वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ, खुद को कॉल कर रहा है. ठीक है, मुझे खुशी का मैसेज आ गया. यस, वेरी गुड. गुरप्रीत का भी, आर्ची, प्राप्त, ठीक है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. ओके, नाउ काइंडली कंसंट्रेट डियर स्टूडेंट्स, एज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स theoretically. So we are just going to do some practical here for understanding this concept, that what do you understand by a recursion here. Okay, so first of all, what I'm going to do here, I'm just going to simply type one function here, as I have mentioned def here, and after that, for example, I'm just mentioning it as a name here. The name, the function name is name itself, and then we are just going to mention it as a print here, print statement, and I'm just going to type here hello dear students. And what I'm going to do here, I'm just going to call that particular function here. This function is almost complete. Okay, this function is almost complete. So what I'm going to do here, I'm just going to call that particular function. And what it makes sense, I'm just going to press F5 and hit the enter key and mention it as a recursion 7. Okay. And whenever we are just going to hit the enter key, it says, it displays the text here, that is hello dear students. If I just want to again copy and paste this information here and press F5 and hit the enter key, it displays the content which is there inside that function twice. दो बार करेगा. But sir, what do you understand by recursion then? My dear respected students, I'm just going to mention here the name of the function here, that is a name. Okay, now what happened here? First of all, when we talk about the execution, this is a line number 1. Okay, after that, this is a line number 2, where we are supposed to call function, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, I'm just going to call that particular function. और जैसे मैंने function को call किया, what happened, my dear respected students, they just reach at that location and they display hello dear students. After that, what happened, again they call that particular function which is named as a name itself, and then again when they call that particular, again they reached here and they display the content, and this is an infinite process. ये रुकने वाला process नहीं है. But one thing, I'm just going to hit F5 and hit the enter key here, and one special thing is going to be appeared on the screen, that in when we talk about some other languages, for example C++, and many more languages, in that case, if we talk about recursion, they display the content infinite time, but in Python they having a particular number of times they are supposed to display that recursive function. So can I just press F5, okay, and hit the enter key here? What happened? Now kindly concentrate. They repeatedly display the content here. Okay, and you are just watch the screen, and okay, now what happened here? It says
here it is a recursion error. मेरे बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, and you are supposed to memorize this thing. Recursion error, sir, what is this error? Maximum recursion depth exceed pickling an object. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम जो इसकी डेप्थ थी, मैक्सिमम जो पाइथन ने इसको अलाउ किया था रिकर्शन के लिए, दे रीच दैट डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन क्या है? प्रीवियस लाइन रिपीटेड 1009 मोर टाइम्स, ये 1009 टाइम्स डिस्प्ले हुआ, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, दे आर सपोज्ड टू टर्मिनेट दैट प्रोसेस. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आई एम रिपीटिंग द कंटेंट अगेन. सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकर्शन? सर, recursion means that function is going to call itself, वो खुद को कॉल कर रहा है, and there are two different procedures that how we can call the function. First is a direct and second is a indirect. अभी तक मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई एग्जांपल डिस्कस नहीं किया, हो सकता है कि ये डायरेक्ट का एग्जांपल हो, बट आई एम जस्ट टेकिंग सम अदर एग्जांपल एज वेल. Next thing what we have learned here, that in case of a Python, if we are going to run a program in which we having a infinite loop here, but what happen, they are supposed to never go infinite time, because a maximum recursion depth is there in case of a Python, and after reaching that maximum recursion depth, they are supposed to terminate the program. अच्छा, एक और चीज, okay. For example, I'm just going to scroll this, and a number of time it's the content is supposed to be displayed. For example, now kindly concentrate. I'm just going to mention here one more thing for you all. Here it is CTRL plus C. This is a keyboard shortcut by which we can stop recursion. अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा इधर. I'm just going to again press F5, hit the enter key, again it starts. I am just going to hit Control plus C. अब मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या आया, previous line repeated 137 more times. It means if you want to stop that recursion with the help of any shortcut key combination, that we can do with the help of a Control plus C. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई हो, कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में yes no टाइप कर दीजिए, and in case you have any suggestion, you can type the suggestion as well, or you can unmute yourself, no issues with that. Very good. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे प्रभजोत का ही मैसेज आया अभी सिर्फ, बाकी लोग भी, हाँ, वेरी गुड. आर्ची, खुशी एंड ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू हिया. गॉड ब्लेस यू ऑल. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Okay, now what we are supposed to do here, kindly concentrate. I'm just going to move towards a PPT section here, and again what happened here, this is the way that we are doing. ये कोड हम पहले कर चुके हैं, we have done with that code, and they says yes, this is the kind of output we are expected here. Okay, so next thing what we are going to learn here, that is the recursion limit here. Okay, so can we do it practically first of all, then we are just going to display this content over the screen. Okay, so next thing, my dear respected students, next thing what we are going to do here, that in spite of using Control plus C, this Python allows us to do it with the help of some modules as well. So what we can do here, we just mentioned import, and here it is sys, sys. Okay, and after that what we are going to do, we are just going to hit that enter, and here it is, I'm just going to mention here that sys, that is a sys here, dot set recursion limit, that is limit will be 20. It says that limit will be 20. Now what happened, my dear respected students, here it says that we are going to import a sys module here, and in sys module we having a particular function which is to be called as a set recursion limit, and we are going to set that limit to 20 here. And now what I am expecting, that after repeating 20 number of times, 20 lines is supposed to be displayed, and then they are supposed to terminate it. So is it possible or not? I'm just going to press F5 and hit the enter key. By default here it says these lines will be 20 only, but by default they display the content here that it says here it is 1009. If you have heard about this thing for here,
it says 1009 more times. That's why when we are mentioning here that it says, yes, this is 29 times they are supposed to display here. Okay, even we are just mentioning here, there is 30 and F5 and hit the enter key. Again, they display that is a 39, that is a 39. Okay. जिन लोगों को मेरी बात यहां तक कंप्लीट है, क्लियर हो चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो मुझे एक बार कृपया करके चैट बॉक्स में यस नो टाइप कर दीजिए. वेरी गुड, ग्रेट. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. वेरी गुड. And in case, very good, thank you very much. And in case you have any kind of query, you are supposed to ask me that query as well. और कल मुझे ना बड़ी खुशी हुई आपके शीट्स चेक करके. अब आप सोचेंगे सर खुशी की क्या बात थी इसमें? खुशी की बात ये थी, मुझे पता लगा कि आप लोगों में बड़ी बॉन्डिंग भी है सब लोगों की एक दूसरे के साथ, और कई लोग एक दूसरे के जैसे, बिल्कुल पता नहीं कैसा हुआ, मुझे तो समझ नहीं आई इस बात के बारे में कि कई लोगों ने बिल्कुल आंसर जो है वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे. चलो मैं मान लेता हूं कि दिस इज बाय चांस, पर आप स्माइल जरूर करिएगा. मैं देख नहीं रहा हूं आपको, आप स्माइल जरूर करिएगा. वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर. क्या लिखा? सर इफ लिमिट इज 30 इट विल गो टिल 39 लाइन्स. ये मेरा पुत्र कौन था? गुरप्रीत है क्या? गुरप्रीत है. यस, मेरा बेटा, जब हम 30 लिख रहे हैं ना, इट मूव्स 39. एज आई हैव मेंशन्ड दैट बाय डिफॉल्ट दे, जैसे हम करते नहीं है, हम कह देते हैं कि 1 GB, तो 1 GB में कितना होता है? 1024 होता है ना. 1 GB की बात करें, 1024, तो हम वैसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं 1000 MBs आर देयर इन 1 GB. इन दैट केस, सिमिलरली when we talk about 30 here, they just add 9 here. So make sure this thing, even I have mentioned 40 here, so they display that they are going to move it 49 times. But when you are supposed to reach here and check that content lines, they only display the 30 lines only, but they are displaying that this is a 39 lines here. Okay, so my dear respected students, I just want to ask one query here. मैं कुछ लोगों से क्वेरी पूछना चाहता हूं. मैं आप इंटरेक्शन भी सबके साथ करूंगा. संजना अनम्यूट करिएगा अपने आप को. संजना विरदी जी. Yes, sir. Sanjana, what do you understand by recursion? Sir, recursion, it is a technique in which a function calls either itself directly or indirectly. Okay, great. And this process is to be called as a recursion. Very good. Thank you. God bless you. Okay. Here it is. One more student I just want to discuss with. अरे वाह. खुराना साहब आए. खुराना साहब अनम्यूट करिएगा. गुंतेज. Okay, Jack, or when we talk about recursion, there is two different procedures further in case of recursion. Can you please elaborate the names of those? Sir, direct and indirect. अरे वाह, क्या बात है. और कैसा रहा था एग्जाम आपका? ठीक रहा था? Sir, yes. अच्छा जी. और शीट देख ली ना आपने? आंसर शीट देख ली ना अपनी? Yes. अरे वाह, Yes. thank you very much. Thank you. God bless you. Okay. Here it is. It says that recursion limit, similar kind of thing is going to be appeared here on the screen, but we have discussed in a practical session here, and this will be the output. And even the student is asking me a question in the previous example as well. If you have watched that, they say 2000 times, but when they display the line repeated, they mention 2009. So I think so that this will be the answer for your query. Okay. Now I'm just going to talk about the types of recursion, and now I'm just going to elaborate this concept with the help of a perfect example as per my knowledge. So first of all, it says where a function call itself directly from within its body. Simple सी बात, बिल्कुल simple. Where a function, जब function call होगा itself, खुद को directly from within its body, जब आपकी फंक्शन की बॉडी में से फंक्शन कॉल हो रहा है, then it is to be called as a direct recursion. And the previous example which we have discussed is an example of a direct recursion. But I'm just going to take one more example here, which elaborate it in a nice way. Even this is to be considered as a direct recursion. Okay, what I am going to do here, my dear respected students, I just want to display
even numbers from 1 to 10. Okay, or we can call it as we just begin with a 2 itself. Okay, so what we are going to do here, we just mention a def here. Def is a definition. Name of the function, we take it as even because we are displaying it as even here. And there is one argument or parameter we are just taking it as. And now we mention if, agar kya kare, n is less than or equal to 10, because I have discussed that I am just taking it till 10 only. So what we are going to do, we are just going to print that particular, that is n, and here it is end. Why I'm just mentioning it as end here, because otherwise they move towards the next line here. Then there is n is equal to n plus 2 here. And then what we are going to do, I'm just going to come out from that particular, and we call that particular even function here. Okay, F5 and hit the enter. What it makes sense, it says even, missing, required, positional. Okay, we can just mention it as, okay, we just mentioned the 2 here and hit the enter key. Oh, it only display 2. Can you please help me that how they display value till 10? Anybody is going to help me out that how this is going to be a recursive function. Very good. Anirudh बोलने लगा था. हाँ, Anirudh बोल. सर लूप चलाना पड़ेगा. नहीं, मैंने लूप नहीं चलाना यार, मैंने लूप को तो छोड़ दिया हुआ है. मैं अब रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लूं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग loops here, iterations here. So anybody helping me out that how we can do that? Very good. बड़ा आसान सा काम है, एक ही चीज करनी है. आपने खुद ही बोला है कि recursion means where the function call itself, then it is to be called as a recursion here. Very good. कौन बताएगा जल्दी से? Here क्या? हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो प्लीज बोलो. इसकी बॉडी में दोबारा इवन को अगर हम कॉल कर लें. वेरी गुड. अगर मैं यहाँ पे खुशी ऐसे करूं, यहाँ पे n is equal to n plus 2 तो इसलिए कर रहा हूं ना मैं, क्योंकि पहली बार 2 है, उसके बाद 2 plus मेरे ख्याल से 2 4 हो जाएगा. तो कैन वी कॉल दैट even function here if you don't mind, and I just mention it as a n here, because what happened here, when it moves 2 here, n is equal to 2 is less than or equal to 10, the statement is true, n is going to be displayed, that is 2 here, n is equal to n plus 2, that is 4 here. Then again they call that particular function with 4 here, and they do that thing till they reach towards 10 या 12. ये 12 तक पहुंचेगा मेरे ख्याल से. 12 को जब है वो false हो जाएगा, and then they are just going to stop their execution. Very good, great. अब ये क्या हुआ? Kindly concentrate. This is the concept of recursion, where we are just going to display the even numbers from 2 to 10. And in that case, make sure this thing that in that case, we are not going to use any kind of loop. We are going to use the concept of a recursion. We are using the concept of the recursion here. Very good. अब मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आ गई है, वो चैट बॉक्स में यस कर दो, नो कर दो, जो आपका मन करता है, जो लिखने का मन करता है वो लिख दीजिए. वेरी गुड. जिनको समझ आ गया वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टाइप करेंगे. यस. जय का आ गया, प्रभजोत. वेरी गुड. खुशी का भी आ गया, और लोग भी हैं यहाँ पे. वेरी गुड. हिया एज वेल. गुरप्रीत एज वेल. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. संजना विरदी जी भी आ गए. वेरी गुड संजना, थैंक यू. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? I'm just going to move towards again the concept of theoretical demonstration, theoretical part. बेटा हर एक थ्योरी के साथ why I'm just introducing a practical, because it's I just want to make this thing clear very much that this theory is being justified, because theory is okay, but without practical nothing is going to be justified. So in that case, next thing what we are talking about, kindly concentrate, it's my humble request here. If a function calls another function, अगर एक function call करता है another मतलब किसी और function को, which call itself caller function. अब ये देखिए हो क्या रहा है,
from within its body. अब इसमें होगा क्या, हम एक फंक्शन लेंगे, वो किसी और फंक्शन को कॉल करेगा, उसके अंदर कोई और फंक्शन डिफाइंड होगा, वो जिस फंक्शन को कॉल करेगा वो भी आगे एक फंक्शन को कॉल करेगा। सर माफी चाहता हूं सर, मेरे को आपकी बात सर समझ नहीं आई है जो आपने बोला। इफ अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन व्हिच कॉल इट्स कॉलर फंक्शन फ्रॉम विद इन इट्स बॉडी, इट इज नोन एज अ इनडायरेक्ट रिकर्शन। सर मेरी बात अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर समझ आ जाएगी। क्योंकि होता ऐसे है ना कि थ्योरेटिकल की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि थ्योरी हमें जल्दी से समझ ना आए, बट प्रैक्टिकल 100% आपको एलैबोरेट करेगा। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक वन मोर फंक्शन हियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, काइंडली कंसंट्रेट। आई एम जस्ट गोइंग टू एलैबोरेट द इनडायरेक्ट अप्रोच हियर with the help of that particular function which display the odd numbers here. So what we can do, we just mention it as n is less than is equal to 10. Okay, great. but यहाँ पे ना एक हम चीज करें, इसको डिस्प्ले की करने की जगह अब हम क्या करते हैं, this is the program actually where we are going to display the values from 1 to 10, and if when the value is odd, we are going to add 1 to that value. मतलब कि अगर जो ऑड की बात करूं तो 1 ऑड हो गया ना, तो 1 के अंदर मैं एक और ऐड कर दूंगा, दैट इज 2। और जब इवन आएगा देन वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 1, मतलब अगर 2 आया तो उसमें -1 हो गया, अगर 4 आया उसमें हम -1 कर देंगे, दैट विल बी 3। इन सच अ वे वी आर गोइंग टू एलैबोरेट दिस कॉन्सेप्ट हियर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ओके, दिस इज अ कंडीशन दैट इफ n लेस देन इज इक्वल टू 10, and it's very important here that there is some base case. बेटा मैं यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी वो appropriate नहीं है, but I am just taking that word here, it is to be considered as a base case. इसका मतलब क्या है कि unnecessary recursion को use करना, and you don't know the answer of that particular, and that process is moving infinite time, which is not a good programming practice. So here it is, make sure when we are going to do something with the help of recursion, we are supposed to mention that what will be the desired output, and that particular thing is to be called as a base case. Okay, so what we are going to do here, I am just going to mention if n less than is equal to 10, then what we are going to do, we are just going to print the value of n here, as mentioned earlier, that if we talk about odd, that is a 1, we are going to add one more value here, and for displaying this content in a same line, I am just going to use and here, and mentioning here n plus is equal to 1. This is, I think so, is very much same to n is equal to n. I am just also going to mention here n is equal to n plus 1. This is very much common, same thing here, not common, this is a same thing here. And what we are going to do here, I am just going to call that even function here. मेरे बच्चों अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुन लेना. What will be a indirect approach here? In that also what we are going to do, we are just going to mention it -1. Odd आएगा तो plus होगा, even आएगा तो minus होगा, and in that case what we are going to do here, in spite of mentioning it is equal to n is equal to n plus 2, what we are going to mention n plus is equal to 1, and as on the previous function we have mentioned that it makes sense, n is equal to n plus 1 here. So what we can do here now, in spite of calling that even, we talk about that this is a odd. मेरे बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज, it's my humble request. What I am going to do here, I am just going to explain the concept of indirect recursion here. What it makes sense, first of all, we are going to call that function odd. This is a function that is to be called as a odd here. Okay, when they reach here, they move towards the body of that particular function, and they call another function which is to be called as a even here. Now the control is moving here on that particular location, and when they move towards the body of that particular, they again call the caller function. ये अब करेगा क्या, odd call करेगा odd के पास, odd body के अंदर गया even को call करेगा,
इवन के पास आने के बाद अगेन इवन इज गोइंग टू बी कॉल्ड द फंक्शन दैट इज ऑड. सो इट मेक सेंस दैट दिस इज द अप्रोच विच व्हाट वी इज टू बी कंसीडर एज अ इनडायरेक्ट अप्रोच. पहले तो रन करने से पहले मुझे सबसे पहले ये बताइए, जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है वो मुझे यस कर दें, नो कर दें फटाफट जरा चैट बॉक्स में, फिर रन करते हैं इस चीज को. इनडायरेक्ट अप्रोच समझ आई कि नहीं आई? अगर नो भी लिखना है तो लिख दीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम एक्सपेक्टिंग योर आउटपुट्स. You all are requested to kindly chat. Type your comments in the chat box. Very good, great. मेरे पास अभी तक सिर्फ जैकौर का आया है, कॉमर्स का अनिरुद्ध जी का भी आ गया. सर प्लीज रिपीट. ओके अनिरुद्ध जी, नो प्रॉब्लम. प्रभजोत इज सेइंग यस एंड हियर इट इज वन मोर स्टूडेंट व्हिच इज सेइंग यस हियर. ओके, अब अगर मेरे पास एक अनिरुद्ध जी का मैसेज आया एंड he is saying that sir can you please repeat for me. Khushi is also saying yes sir, and many more students are saying yes sir. So can I just randomly pick one name here? प्रभजोत, आप थोड़ा सा अनिरुद्ध जी की हेल्प कर सकते हैं. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कंवलजीत सर कर देते हैं. आप बताएंगे प्लीज. यस सर. हाँ जी प्लीज बोलिए ना. सर सबसे पहले हम ऑड फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, और जो हमने बेस केस लिया है उसमें हमने n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 लेके हमने ऑड केस में n+1 लेना है. ओके, उसके बाद हमने ऑड फंक्शन की बॉडी में इवन फंक्शन को कॉल किया है. उसके बाद हमने इवन फंक्शन को डिफाइन करके इवन फंक्शन में n-1 की वैल्यू लेनी है. ओके, अच्छा एक सेकंड. सॉरी प्रभजोत, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू. Apologies for the same. Here it is on the bottom hand side. There is a definition of indirect recursion. It says if a function calls another function. इसका मतलब क्या हुआ? इसके एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग टू बताते जाइए. आप इलेबोरेट करिए, एक एक वर्ड रीड करके इलेबोरेट करिए ऊपर एग्जांपल को कि ये जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं. बोलिए. वेरी गुड. सर जो फर्स्ट फंक्शन है डेफ ऑड, वो हमारा कॉलर फंक्शन है. वेरी गुड. उसके अंदर हमने लास्ट में इवन फंक्शन को कॉल किया है. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हमने इवन फंक्शन में जैसे n की वैल्यू n-1 ली है जी. उसके बाद हमने इवन फंक्शन में हमने कॉलर फंक्शन ऑड को कॉल किया है. कॉलर फंक्शन ऑड को दोबारा से हमने कॉल कर लिया. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑप्शन, विच टॉपिक? रिकर्शन. Recursion, further explanation for recursion, indirect recursion. Indirect recursion. Very good, thank you. अनिरुद्ध अनम्यूट करेगा यार एक बार अपने आप को प्लीज. यस सर. मेरा बेटा समझ आया? सर जो वो डेफ ऑड एन है वो पहले जो कंट्रोल फ्लो होगा वो ऑड 1 में आएगा. ये देखना अनिरुद्ध, जब पहले ऑड की बात की ना हमने, तो ये कंट्रोल यहाँ पे आ गया ना, मेरा पुत्र ऑड के पास आ गया. फिर ये इसकी बॉडी के अंदर चला गया. अब बॉडी के अंदर गया तो इसने कॉल किसको किया? इवन फंक्शन को. ये देखिए इवन आ गया है ना. तो इवन को जैसे ही किया फिर दोबारा इसने किसको कॉल किया? दैट इज ऑड. अब ये ऑड को करने के बाद दोबारा फिर क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा. ठीक है. अगेन इट रिपीट. अगेन ऑड के पास किया, कंडीशन चेक किया, चेक करने के बाद फिर इसने किसको कॉल किया? इवन को. एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेडली परफॉर्मिंग. कब तक परफॉर्म करता रहेगा? जब तक ये अपनी इस बेस केस को, जहां पे इसको रुकना है, इस कंडीशन को जब तक सेटिस्फाइड करता है. जैसे ये अनसेटिस्फाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड. वो स्टॉप हो जाएगा. अनिरुद्ध मेरे पुत्र, मेरी बात समझ आई है? यस सर. Okay, I'm just going to run that particular program. Kindly concentrate. It's my humble request, my dear respected students. I'm just going to hit F5 and hit the enter key here. So अब मेरे को थोड़ा सा अगर कोई गाइडेंस दे सके कि सर ये आउटपुट कैसे आया, प्लीज एक एक करके सबसे बात करना चाहूंगा. मैं सबसे बात करूंगा. संजना, ये 2 कैसे आ गया यार? हम तो पहले 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई. हाँ जी संजना जी बोलिए प्लीज. संजना, यहाँ पे 2 कैसे आ गया? वी आर एक्सपेक्टिंग 1 हियर. ओके, नो प्रॉब्लम. आर्ची धवन जी, हाउ 2 comes here? We are expecting 1 here.
बिकॉज पहले n की वैल्यू 1 आई होगी, तो फिर Very जब good. वो डेफ ऑड में आ गया, इसमें 1 में चली गई तो उसमें +1 हो गया। उसके फिर उसके उसके लिए बाद +1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और आरती धवन साहब आपसे ही पूछ लेता हूँ कि ये फिर 2 के बाद 1 क्यों आया होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर कौन से सी वैल्यू होगी? दोबारा जब 1 ऐड हो गया तो हमने इवन फंक्शन कॉल किया, फिर जी। इवन फंक्शन में जाके तो अंदर -1 हो गया। वेरी गुड। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कर क्या रहा है, बार बार फंक्शंस को कॉल कर रहा है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, और जब ये ऑड करता है तो ये +1 कर देता है, और जब ये इवन कर देता है देन इट इज डूइंग अ -1 हियर। जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है चैट बॉक्स में यस नो रिपीट टाइप कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट जरा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। वेरी गुड, ग्रेट, अरे वाह, प्रभजोत जी यस, आरती धवन जी यस सर, हिया जैकौर वेरी गुड वेरी गुड, 11 12 नॉन मेडिकल, खुशी खेती साहब वेरी गुड, और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, यहां तक मेरे बच्चों को सबको क्लियर हो गया मुझे लगता है, आई थिंक सो। ओके, नाउ व्हाट दे डू हियर, द राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर बिटवीन 1 to 10 यूजिंग डायरेक्ट रिकर्शन। ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने किया है, आई थिंक सो दिस इज द same program here. We are not going to discuss that particular here. Indirect recursion, similar kind of program what we have discussed here, that how we are going to add 1 in case the value will be odd here, and how we can minus that particular if the value will be even here. So can you please help me out? I just need your help. Okay, this is the way that we are talking about. This is the way. Okay. So what it makes sense, kindly concentrate, my dear respected students. This is a recursive procedure and this is a base class. Beta, this is very important, because when we talk about programming and programmers, in that case, if we do recursion n number of time without any reason, so it's very looking very odd here. So it makes sense that we know each and everything beforehand. Okay, so what it makes sense base case. अच्छा, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ here factorial of 1 क्या होता है? So 1, factorial of 2 क्या होगा? 2, factorial of 5 क्या होगा? 120. अरे वाह, अब ये क्या, इसका क्या मतलब है? Why I am asking these questions here beta, because I want that what you are going to perform, the result, the desired result is being in your brains. आपको मैंने बोला factorial of 5 क्या हुआ, आपने बोला 120. It makes sense that when we are using a recursion, we know each and everything beforehand, that where we have to reach, and after that we are supposed to terminate that particular recursion. This is the way we are talking about, why we are using the concept of a base case, or we can also call it as a stopping case. So it says we must know how to solve the problem. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि problem solve कैसे करनी है. Second thing, the case that causes the recursion to end. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि this is the case, but with the help of that we are going to terminate our recursion. We are supposed to terminate our recursion here. Okay, and the next thing, my dear respected students, which is going to be displayed, which is a recursive case, is the more general case of the problem trying to solve using recursion. Call to same function again and again. We are calling to the same function, but we don't have any idea that where it is going to be stopped. So this is to be called as recursive case. But if we know that how we can stop that, this is to be called as a base case, or we can also call it as a stopping case. Okay, so what we are going to do here, my dear respected students, we are going to write a program. We are going to write a program to display the sum of n natural numbers. You do it, you previously, I think so, you have done this with the help of looping, but can I do this with the help of recursion here? Kindly concentrate. So what we can do, we just mention the name of the function def here, sum
of natural numbers. That's why I take it as s underscore o underscore nn, and here it is the value we are expecting from the user here. It says अगर अब देखो मेरा बेस केस क्या है, मुझे पता होना चाहिए हर एक बारे में. मैंने कहा if n is less than is equal to 1, if n is less than is equal to 1, then they return n here. वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? n. आफ्टर दैट else, अगर ये नहीं होता, अगर वो n तक लेस देन इज इक्वल टू 1 तक नहीं पहुंचता, तो व्हाट दे डू, दे रिटर्न n प्लस सम ऑफ natural numbers, that is n minus 1, that is to be considered as a n minus 1. वो हर एक बार क्या करेगा, अगर हम 5 की वैल्यू डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमें वैल्यू कैसे करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. 5 4 3 2 1. This is the recursive approach. Okay, so what we do here, we just mention it like this. We are expecting one value here and mentioning input and the natural number here. Okay, but how if n is less than is equal to 0? Because maths वाले भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से 0 जो है वो natural number नहीं होता, I think so. So what we are going to print here, we are just going to print here not a natural number, not a natural number. This is not a natural number. Else we can talk about else here, else here, and what we are going to do, print the sum of natural number is equal to sum of natural number function, and we can pass the n here. मेरे बच्चों, sum of natural number. This is I think so there is no typing error here. So what I'm going to do here, first of all, I'm just going to run that particular program here, and after that I'm just going to discuss with you that how this program will work. So what we are going to do, we are just going to hit that enter, and as discussed with Hiyaji, that 5, and it says sum of natural number 5 is 15, I think so. मेरे ख्याल से 10 अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 अगर करूंगा तो मेरे ख्याल से 10 में 55 आना चाहिए, I think so. I've just mentioned, yes, it says that this is a 55. So अब कौन elaborate करेगा? Who is going to elaborate this concept here? Very good. Be quick. I just need your help. Nupur, unmute कर, एक बार बता क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन को elaborate कर दे सिर्फ. नुपुर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, नो इश्यूज. अगर आएगी तो नुपुर बोलेगी जरूर. वेरी गुड. ओके, आई जस्ट टेक इट एज मैं अब लूंगा. गुंतेज तो नहीं बोल रहा. गुरप्रीत, एक बार एलैबोरेट करके दिखा तो यार, कोई आइडिया है हाउ इट वर्क्स? गुरप्रीत जी अनम्यूट करिएगा. होपफुली मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को, होपफुली.